Hello. Today we are going to discuss about Geography Class 9 Chapter 3 Drainage. First of all, we should know what is drainage. Drainage means the river system of an area. Now we will talk about drainage basin. The area drained by a single river system is called drainage basin. Now water divide. Any elevated area such as mountain or an upland separates two drainage basin. सच एन अपलैंड इज़ नोन एज वाटर डिवाइड। आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। कोई भी ऊंचा क्षेत्र चाहे माउंटेन हो या पहाड़ हो, जब पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है दो विपरीत अलग अलग भागों में, तो उसको वाटर डिवाइड बोलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। और इंडियन रिवर को टू मेजर ग्रुप्स में बांटते हैं हम, हिमालय रिवर, पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर जो होते हैं उनका ओरिजिनेट प्लेस हिमालय होता है एंड मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। इसमें पूरे साल भर पानी रहते हैं और इनको वाटर मिल जाता है रेन से एंड मेल्टेड स्नो से। जो हिमालय होता है वो स्नो से भरपूर रहता है और गर्मियों के दिन में स्नो पिघलता है तो इनको इससे भी पानी मिल जाता है। ओके। और जब ये पानी बहना स्टार्ट होता है यंग स्टेज में ये इरोजनल फीचर्स बनाना स्टार्ट करते हैं लाइक गॉर्जेस। बाद में ये डिपोजिशनल फीचर्स बनाते हैं मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स में जाके। इनका रफ्तार पानी का स्लो हो जाता है और बाद में ये मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स वगैरह फॉर्मेशन करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स। ये सीजनल रिवर होते हैं और गर्मियों के दिन में इसमें पानी सूख जाता है और बारिश के दिन में इसका फ़्लो अच्छा रहता है और इसका जो रिवर कोर्स है ये हिमालयन रिवर्स से शॉर्टर होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हिमालयन रिवर। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ए रिवर along with its tributaries may be called a river system। कोई भी रिवर वो अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ उसको हम रिवर सिस्टम बोलते हैं। Now we will talk about the Indus river system. The river Indus rises in Tibet near Lake Mansarovar. The Satluj, Bias, Ravi, Chenab and Jhelum join together to enter the Indus near Mithankot in Pakistan. The Indus plain has a very gentle slope with total length of 2,900 km. The Indus is one of the longest river of the world. The Ganga river system. The headwater of the Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. At Haridwar, the Ganga emerges from the mountains onto the slope and plain. The river Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas. It flows parallel to the Ganga. As a right bank tributaries meet the Ganga at Allahabad. The Ghagra, Gandak, Kosi rise in the Nepal Himalaya. The main tributaries which come from the peninsula uplands are Chambal, Betwa, Son. Now we will talk about the length of the Ganga, which is 2,500 km. Now we will talk about the Brahmaputra river system. Brahmaputra rises in the Tibet east of the Mansarovar lake, very close to the source of the Indus and Satluj. And every year during the rainy season, the river overflows its bank, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by the huge deposit of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. Now we will talk about the Peninsular River. Most of the major rivers of the peninsula such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri flow eastward and drain into the Bay of Bengal. These rivers make deltas at their mouth. There are numerous small streams flowing west to the Western Ghat. The Narmada, Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. Now we will talk about the Narmada basin. Narmada rises in the Amarkantak hills in Madhya Pradesh.
It flows towards the west in a rift valley formed due to faulting. On its way to the sea, Narmada created many picturesque locations. And Narmada Basin covers parts of Madhya Pradesh and Gujarat. Now we will talk about Tapi Basin. Tapi rises in the Satpura range in the Betul district of Madhya Pradesh. And it also flows in a rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in length. Its basin covers parts of MP, Gujarat and Maharashtra. Now we will talk about the Godavari Basin. Godavari is the largest peninsula river. It rises from the slope of the Western Ghat in the Nasik district of Maharashtra. Its length is about 1500 km. It drained into the Bay of Bengal. Now we will talk about Mahanadi Basin. Mahanadi rises in the highlands of the Chhattisgarh. It flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. The length of the river is about 860 km. Its drains basin is shared by Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. Now we will talk about the Krishna Basin. Rising from the spring near Mahabaleshwar, the Krishna flows about 1400 km, reaches the Bay of Bengal. Kaveri Basin. Kaveri rises in the Brahmagiri range of the Western Ghat and it reaches the Bay of Bengal in south, Kudalur in Tamil Nadu. The total length of the river is about 760 km. And now we will talk about the lakes. आप लोगों ने लेक के बारे में पढ़ा होगा, कश्मीर लेक के बारे में, जो कि फेमस है डल लेक. एंड वहाँ पर हाउस बोट्स है, शिकारास है, विच अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर. ठीक है, ऐसे बहुत से आपने देखा होगा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ लेक है, लोग बोटिंग एंजॉय करते हैं, स्विमिंग करते हैं और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं. ओके, जैसा कि आप जानते हैं लेक से हमें फ्रेश वाटर मिलता है. इंडिया हैज़ मैनी लेक्स. दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. मोस्ट लेक्स आर permanent. Okay, some contains water only during the rainy season, like the lakes in the basin of inland drainage of semi arid regions. ठीक है, और कुछ सीजनल होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो सांबर लेक इन राजस्थान, which is a salt water lake. Okay, and its water is used for producing salt. And most of the freshwater lakes are in the Himalaya region. The Wular Lake in Jammu and Kashmir, in contrast, is the result of tectonic activities. It is the largest freshwater in India. Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Loktak and Barapani are some other important freshwater lakes. Okay? And lakes can also be used for developing hydroelectricity. As you know, lakes can also be used for developing hydel power. They moderate the climate of the surroundings, maintain the adequate ecosystem, and enhance natural beauty, help develop tourism, provide recreation. Thank you.